morning, dear students. Welcome back to Banner Online Classes. Today, our topic is data file operations. So, without any further delay, let's get started. So, following main operations can be done on the file. The first operation is opening a file, and then second operation is performing operations, and these operations are read and write operations, and the last one is closing the file. So what basically we do, we open a file, and after opening that file we perform read and write operation on that file according to our requirement, and when we have done with these operations, then we will close that file for security purpose. Now apart from that, there are some more operations can be done on the files. These operations are creating a file, we can create a new file. Traverse of data, we can traverse the data which is stored in a file. Appending data into a file, we can add additional data to a file. Insert data into a file, we can create a blank file, and after that we can insert the data on that file as well. Deleting data from file, we can delete the data from file as well. Copying a file, we can copy the data from one file to another. And the last is updating data into a file. If there is a mistake in the file, then we can update the data as well. So these are some operations which are performed in our data file. Now the next point is opening a file, because the primary operation is opening a file. Because जब तक हम फाइल ओपन नहीं करेंगे तब तक हम उसमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. सो द फर्स्ट ऑपरेशन दैट वी विल परफॉर्म इज ओपनिंग फाइल्स. सो वी नीड अ फाइल वेरिएबल और फाइल हैंडल टू वर्क विद फाइल्स इन पाइथन. दिस ऑब्जेक्ट can be created by using open function or file function. Open function can be used to open or create a file in Python. It can be useful in various forms and the syntax. So now to open files, we need one file object or file handle, and we can create file object or file handle by using this open function or file function. Generally we will use that open function, and if we use this file handle, so what this file handle will do, it will either open the file, and if the file is not present, then we can create a new file as well with the help of this open function. Okay, so this is the responsibility of file object. Now we will see the syntax of opening a file. First of all, we will write the file object name. It can be anything. It is a just simple variable. Then we will write open, and then we will write the name of the file that we want to open. See here, the example is f equals to open mydata.txt. I want to open mydata.txt, and this is my file object. Now we can either write the access mode, whether I want to open the file in read mode or write mode, or basically there are three basic mode: read, write and append, that we will discuss in the later classes. So here you just simply assume that कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, access mode भी लिख सकते हैं. Either I can write R belongs to read, either I can write W belongs to write, either I can write A belongs to append. अभी क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, that we will discuss in our later classes in very great detail. Now I have do not mention any access mode. तो by default अगर हम कोई भी access mode define नहीं करते हैं, तो जो default mode होता है वो read mode होता है. Okay, अगर मुझे किसी भी फाइल को read mode में ओपन करना है, तो वहाँ पर मुझे उसका access mode देने की requirement नहीं है. बट यहाँ पर मैंने फाइल को राइट मोड में ओपन किया है, so that's why I need to mention the access mode here on that case. Now the third example is file object name, open, file path and access mode. So here
In the third example, here I am writing the whole path. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज हो सकता है कि ऑन विच केसेस आपको फाइल का पाथ देना है और कौन से केस में फाइल का पाथ नहीं देना है। अगर फाइल पाइथन की लोकल डायरेक्टरी में सेव हो रही है, सो ऑन दैट केस वी डोंट नीड टू गिव द फाइल पाथ। बट अगर हम फाइल को अपनी लोकेशन में कहीं सेव कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको फाइल का पाथ मेंशन करने की रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा mydata.txt, तो पाइथन का कंपाइलर विल लुक फॉर दैट फाइल, एंड वेयर पाइथन कंपाइलर विल सर्च दैट फाइल, it will search that file in the local directory folder. If file is present on that folder, then it will be accessed. Otherwise, Python compiler will raise an error. But here I have mentioned the whole path. और यहाँ पर क्या है कि मैं फाइल को किसी भी लोकेशन में सेव करूँ, चाहे सी ड्राइव में करूँ, चाहे डी में करूँ, चाहे डॉक्यूमेंट में करूँ, चाहे डाउनलोड में करूँ, चाहे डेस्कटॉप में करूँ, इट विल बी ओपन। ठीक है। नाउ आई होप दीज एग्जाम्पल्स आर क्लियर टू यू। Now in the next slide we will see opening files. Now the first statement opens a file named mydata in read mode, which is default. Here I have already told you, because here I have not mentioned any access mode, so by default it will take the read mode and it will search mydata file in the local directory of Python. Now the second point is, the second statement opens the file in write mode as mentioned. So here the file will open in the write mode because I have mentioned it. So this point is also very simple. And the third point is, the third statement opens the file from specified path. तो ये जो फाइल ओपन होगी, ये एक स्पेसिफाइड पाथ जो मेंशन है उसी में आपका ये फाइल ओपन होगी। एंड हियर आई हैव आल्सो राइट द आर, आई वांट टू ओपन दैट फाइल इन द रीड मोड, ऑल्दो दिस आर इज नॉट मैंडेटरी, बट इफ वी वांट वी कैन राइट इट आल्सो, it will not raise an error either you write R or not, because the default mode is read mode. Now the main point you need to understand here, that here you can see that I have written the double slash. Why I am writing double slash here? The double slash in Python is used to avoid the spatial meaning of any escape sequence like /n or /t. If we want to use slash in the file path, the character R must be prefixed in front of the path, which makes it a raw string, which means that there is no spatial meaning attached to any character. So here, whenever you write the path, you have to take care that you cannot write the single backslash here, because जब आप by default किसी भी फाइल का पाथ देखोगे तो वो क्या होता है, आपका सिंगल स्लैश होता है। बट अगर आप जैसे ही इसको सिंगल स्लैश के साथ लिखोगे तो वो ऑटोमेटिकली पाइथन का कंपाइलर उसको क्या समझ लेगा, एक स्केप सीक्वेंस समझ लेगा, और जिसके थ्रू क्या करेगा, वो उसको एरर रेज करेगा। सो टू अवॉइड दैट आई हैव टू मेथड, आइदर आई कैन राइट डबल स्लैश और आइदर आई कैन प्रीफिक्स आर बिफोर दैट एड्रेस। सो दोनों मेथड से क्या होगा, हम इस प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं। ये हम अभी एग्जाम्पल में भी देखेंगे। और जिसको ये पॉइंट समझ में नहीं आया, सो आई थिंक यू हैव टू take the revision of the first chapter, that is Python fundamental of class 11th. class 11th में Python fundamental में एक टॉपिक है non escape sequence, so you have to revise that chapter so that you will understand कि non escape sequence क्या होते हैं और किस तरह से ये स्टेटमेंट आपको ट्रबल कर रहा है, बिकॉज ये क्यों उसको एक escape sequence समझ रहा है। ठीक, so for that you have to revise that topic of class 11th as well. Now the next slide is what is file object और file handle. ठीक है, ओपनिंग ऑफ फाइल में हमने पढ़ा था कि फाइल ऑब्जेक्ट और फाइल हैंडल के बारे में। बेसिकली फाइल ऑब्जेक्ट्स आर यूज्ड टू रीड एंड राइट डेटा टू अ फाइल ऑन डिस्क. The file object is used to obtain a reference to the files on disk and open it for a number of different tasks. All the functions that you perform on a data are performed through file objects. So basically what are the file objects
if you want to read or write on a file, so on that case we need a one file object. Without this file object we cannot perform any operation on the file, because this file is stored on a disk and we want to apply the read and write operation in our Python compiler. So for that case we need this file objects. And the next point in that, all the functions that you perform on the data file are performed through file objects. And if I want to read or write something or append something, I will apply all these operations with the help of file objects. Without file objects I cannot access these functions. Okay, so we will see all these in the example. So this will be the last slide in which we will learn how to close files. The close function is used to close open file, because if we are opening a file, so it is our responsibility to close that file as well for the security purpose. After using close function, no operation can be performed on the file, and when we close that file, after that we will not perform any operation on that file. And now we will see the syntax of that. What will be the syntax? We will write the file object, then we will write dot, then we will write the close. Again, just प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा, अगर हमें कोई भी ऑपरेशन फाइल पे परफॉर्म करना है तो विदाउट फाइल ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम नहीं कर सकते. तो दिस इज माय फाइल ऑब्जेक्ट, देन डॉट, देन क्लोज. ओके, सो आई होप these points are clear to you. Now I will open my Python local directory, and this will be the path of my Python local directory. And here in this directory I have one file demo.txt. Here you can see that I will make it large so that it will be visible for you. Here you can see that I have demo.txt, this file, and when I open that file I have write some text on that file. Okay, now what I will do, and I will open that file and perform the read operation on that file. Now I am making the simplest program. So for that I will write f equals to open, and then I will write my file name. My file name is demo.txt. Okay, now when I press the enter key it will be executed. यहाँ पर ये जो f है वो क्या है, आपका फाइल हैंडल है, और ये जो फाइल ओपन होने के बाद सारा का सारा कंट्रोल किस पे आ जाएगा, f पे आ जाएगा. Now if I want to read that file, so I will write f.read function. ठीक है. So again I am saying कि जो भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है वो किसके हेल्प से करते हैं, फाइल ऑब्जेक्ट की हेल्प से. तो पहले हम फाइल ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डॉट, देन रीड. नाउ अब ये जो फाइल रीड होगी हम उसको क्या करेंगे, एक किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर कराएंगे. सो हियर f, यहाँ पर मैंने क्या किया है, इस f फाइल हैंडल में जो फाइल है उसको रीड किया है, और रीड करने के बाद सारा का सारा कंटेंट किसमें डाल दिया है, ए पे डाल दिया है. और नाउ व्हेन आई प्रिंट दैट a, so here you can see that I will see that test here also. ठीक है. So this is how we can apply the read operation. Now we will see the second example. For that I will close that file, and here you can see that एक और फाइल मैंने अपने डेस्कटॉप पे क्रिएट करी है, demo.txt. Now इस जो फाइल है ये पाइथन की लोकल डायरेक्टरी में स्टोर नहीं है, सो इसका जो पाथ है वो मुझे देखना पड़ेगा. सो मैं राइट क्लिक करके पहले इसका पाथ चेक करता हूँ. तो दिस इज द लोकेशन ऑफ दैट फाइल. नाउ आई विल कॉपी दैट लोकेशन, and again I will open my IDLE and I will apply the operation. First of all I will write my file object, then I will write open, then I will write the complete file name here in my double quotes, and after that I will write the file name here, backslash, my file name is demo.txt. Now see student, immediately when I press the enter key it has raised an error. Why? Because I have already told you कि आप यहाँ पर बैकस्लैश का यूज नहीं कर सकते. क्योंकि जनरली जो आपको पाथ विंडोज में देखने को मिलेगा वो आपको सिंगल बैकस्लैश ही वहाँ पर आपको प्रोवाइड होगा. Now to avoid that problem, what we will do, I will either write
R in front of that address, और जैसे मैं R यहाँ पर लिखता हूँ, so अब ये जो पूरी की पूरी स्ट्रिंग है वो बन जाएगी रॉ स्ट्रिंग, जो कि ये इंश्योर करेगी कि यहाँ पर कोई भी नॉन स्केप सीक्वेंस नहीं है और किसी का भी स्पेशल मीनिंग नहीं है. और नाउ व्हेन आई प्रेस द एंटर की, यू कैन सी दैट उसने कोई भी एरर रेज नहीं किया. ओके, नाउ what I will do, I will simply write print, and now I will simply write f dot read. So directly मैं f dot read को फाइल को रीड करके प्रिंट करवा रहा हूँ, किसी वेरिएबल में इसको स्टोर नहीं कर रहा हूँ. And now when I press the enter key, you can see that it is printing the test. Now we will see the second method of opening a file. For that, what I will do, I will not use the raw string concept. Instead of that, what I will do, I will use double slash instead of slash. Okay, so here you can put double slash in the whole string, and now when I press the enter key, you can see that it has not raised an error. And when I write again print then f dot read, here you can see that now it is printing the file as required. Okay, so this is the two ways of accessing the file which is stored in our local computer. Now after that, what you will do, you will simply write f dot close. Although writing f dot close is not mandatory, it will not raise any error if you don't write, but it is a good practice to close a file, and it is very important for the security purpose. Okay, so you all will close the file as you have performed all the operation. Now again, if I want to print f.read, here you can see that it is raising me error because it is clearly showing that you are performing input and output operation on a close file. So you cannot perform any operation on the close file. Okay, so this will be better for your security purpose also. Okay, so you will open a file, you will perform read and write operation, whatever you want to do you can do, and when your task is done you will close your file. So this will be the syntax of file handling. Okay, so I hope these things are clear to you. So student, that's it for today. Thank you and keep learning.